about the implementation of a uniform civil code. While there is so much political noise and chatter about the need for a uniform civil code in this country to ensure that various conflicting laws do not apply, a debate that we were just having some time ago, Law Minister Kiren Rijiju has informed the Rajya Sabha that so far there is no decision to bring in a uniform civil code yet. This is a position that has been stated repeatedly by the government of the day in the Supreme Court as well, and now the Parliament is also informed about the same. Ananya, what more do we have? Well, the Law Minister has come out and given out a statement before the Rajya Sabha. He was answering a parliamentary question at the Rajya Sabha, and he clearly said that the work of studying the various personal laws which are to be taken into consideration before actually implementing a uniform civil code were tasked with the 121st Law Commission. However, the term of that particular commission ended, and then the 122nd Law Commission has now come in, and that would be actually studying all of these personal laws. So at this present time, there is no proposition or no, a purpose to bring in a uniform civil code until and unless, in fact, the Law Commission actually studies all of those personal laws and gives out its report as to whether or not such a thing is actually possible or not. And that's the reason why the government is not giving out any kind of a proposal at this moment of time with regards to a uniform civil code in the country. But similarly, if you remember, in the last session of the Parliament, the Law Minister had stated that though the central government is not bringing a uniform civil code at this moment of time, but then definitely the states can go on with their directive to implement such a law in their particular state, and that is something that has not been said at this point of time. However, this was the position in the last parliament session, but at this moment of time, the government has clearly said that there is no proposal to bring a uniform civil code bill in the parliament at this moment. Anusha. There was a law commission that was formed under the retired Justice B.S. Chauhan, and they had given out a detailed report on the possibility of bringing in a uniform civil code here in India. That particular law commission had opined that there are various impediments that lie in the way if a UCC were to be made a reality in this country. The idea of a uniform civil code is something that was debated widely at the Constituent Assembly debates as well. There were various proponents, including Dr. Ambedkar, who were very keen on having a uniform civil code as soon as possible. However, that could not be turned into a reality, and the personal laws continue to survive here in India. To have one law that governs marriages, divorces, inheritance, adoption, and various other facets of individuals' personal life, and one set of rules that govern Indian citizens, irrespective of their religion, is a dream that is yet to be recognized. As the Law Commission stated earlier, there are various impediments that lie in the way. Adultery law that has been now streamlined by the Supreme Court of India, the 6th schedule of the Indian Constitution that gives special land rights, and various other communities which have different practices and customary practices when it comes to marriage and divorces, especially in the northeast of the country, are those parts of the Constitution that still need to be reconciled when a uniform civil code is to be made a reality. However, there are certain steps that can be taken, including the mandatory registration of marriages, a step that certain state governments have already taken. Mr. Vinod Bansal from the VHP is joining us on the broadcast. Vinod ji, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी तक केंद्र सरकार का कहना है कि कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, कोई आखिरी फैसला लिया नहीं गया है, कोई ऐसा कानून नहीं है जो अभी तैयार है और संसद में पारित हो सकता है. आप कैसे देखते हैं इस वक्तव्य को? देखिए, हमारा एक निवेदन है कि चूंकि सरकार कमिटेड सरकार है और सरकार का आज का नहीं है, 1989 का जो मैनिफेस्टो है, कमिटमेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होगा. और इसके अलावा देखिए, द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री itself says that the state will endeavor to implement the uniform civil code for all of the country on which is applicable to all citizens of the country. तो बेसिकली क्या है कि हमें आशा है कि ठीक है, टेम्परेरी गवर्नमेंट की कुछ मजबूरी हो सकती है, बट डेफिनेटली दे विल टेक अप द मैटर एंड डू देयर बेस्ट. विनोद जी, ये एक ऐसी सरकार रही है जो कड़े फैसले लेने से शर्माती नहीं है. किसी भी तरीके के फैसले हों, चाहे वो 370 हटाने की बात हो या कोई भी ऐसे फैसले हों जिनके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस या राजनीतिक मूल्य बहुत ज्यादा हो सकता है, इन लोगों ने रुके नहीं हैं कभी किसी भी तरीके के निर्णय लेने से. फिर क्या वजह हो सकती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा अहम मुद्दा जो देश के कानून को पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष बनाता है, इतना अहम मुद्दे पर अभी तक सरकार कोई कदम नहीं उठा पाई है? ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो आज भी बीच में है?
देखिए मजबूरी क्या है ये तो सरकार गिनाएगी, डेफिनेटली दे आर द बेस्ट जज टू से अबाउट इट, बट द क्वेश्चन इज दैट कि हमें पूरा विश्वास है कि ये सरकार जो है ना जी कहने में करने में ज्यादा विश्वास करती है। और अब इतने भी चाहे धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, या और इस तरह के 3 तलाक की बात हो, जिन्होंने कभी कहा नहीं कि हम इसको अभी करेंगे, अभी कर रहे हैं, और दिखा दिया। भारत के लोगों को इस बात का बड़ा गर्व है और इस बात का संतोष है कि जो वो चाहते हैं वो प्रभु कृपा से और सरकार चीजों ठीक है, टेम्परेरी स्टेट कुछ होगा माननीय मंत्री जी का, लेकिन मेरा कहना है कि डेफिनेटली इंटरनली कुछ न कुछ काम जरूर हो रहा होगा, क्योंकि दैट इज अ नीड ऑफ द आवर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री डिमांड्स दिस इटसेल्फ। समान आचार संहिता और यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए क्यों जरूरी है? कई लोगों का कहना है कि विविधताओं का देश है, अलग अलग नियम है, कानून है, सबकी अपनी प्रथाएं होती हैं, तो हमें एक आचार संहिता की क्यों जरूरत है? विनोद जी। नहीं, ऐसा नहीं है, आचार संहिता तो एक होनी चाहिए। जब देश है, क्या देश की संस्कृति है, क्या देश के नैतिक, देश का संविधान है, क्या देश का ध्वज है, क्या देश की परंपरा है, तो आखिरकार दो कानून क्यों एप्लीकेबल होना चाहिए? दैट ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन। आप मुझे बताइए, बेटी के अधिकार जो हिंदुओं को मिलते हैं वो मुस्लिम मिलने चाहिए। एक बेटे के अधिकार जो दत्तक है, जो मुस्लिम बेटे को या क्रिश्चियन बेटे को क्यों नहीं मिलने चाहिए? Why the disparity is being created between the two regions of the country? और दूसरी बात ये बताइए कि जिस तरह से उनके अधिकारों को कुचल दिया जा रहा है लगातार, देखिए ये मामला कोई रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्हाट आई सी इज कि इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द ह्यूमैनिटेरियन क्राइटेरिया। आप एक बच्चे के अधिकार को आप छीन रहे हैं, एक महिला के अधिकार को आप छीन रहे हैं। आप अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाते तो डेफिनेटली एक दो बेटियों के बीच में एक मानसिक उद्देश्य पैदा कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं पिछले 75 वर्ष में, मुझे लगता है कि जरूर बढ़ेगा और इस अमृत में डेफिनेटली वो कुछ था जो कि अकल्पनीय होगा। लेकिन विनोद जी, बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन नहीं हो सकता, एक झटके में नहीं किया जा सकता। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो देश की अदालतों को, सरकारों को लेने पड़ेंगे और तभी हम उस दिशा में बढ़ पाएंगे। एंड होपफुली वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। थैंक यू मिस्टर विनोद बंसल फॉर जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट।